Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well and you are also doing your study. It is your computer class for class 9. Chapter 18. Chapter name is Data Analysis and Representation. Part 1. So, in this chapter, we have discussed about to apply conditional formatting, that how we can apply conditional formatting in a document and what is conditional formatting. So for this, I'm going to show you a video, and with the help of this video, we will understand the topic, and after then in our live class we will discuss about this topic. Okay, so here's the video. Please listen it carefully. Mother is a teacher in a school. The final exams have just finished. She is going to prepare the final result and analyze the performance of the class students. You are excited to help your mother analyze the students' performance by using the features of Microsoft Excel. You have entered the sample data that include the roll number, name, marks in different subjects, and calculated total marks, percentage, and grade for each student. To analyze the performance of the students, you need to highlight the percentage greater than 80 with green color and the marks that are less than 40, that is, failed ones, with light red color. So it's a result of a class, and we are applying here conditional formatting. कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है हमें यहाँ पे. नाउ यहाँ पे क्या है, जो बच्चे फेल हैं उनको रेड मार्क हो जाना चाहिए, और लाइक जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके ग्रीन हो जाना चाहिए. कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स कि हमारी कोई कंडीशन है और उस कंडीशन को हम अपनी एक्सेल शीट पे इस तरीके से अप्लाई करें कि हमें शीट को देखते ही ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई, हमें डेटा को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़े, हमें बार बार डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़े. अब इस शीट को देखते ही आपको ये समझ में आ जाए कितने बच्चे फेल हैं, क्योंकि उसको रेड कर दिया गया है. ठीक है, सो दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. To analyze the result of students, you need to use the data displayed. To highlight the percentage greater than 80 with green color, select the cells from I2 to I21 which display the percentage. Select Highlight Cells Rules and then Greater Than from the Conditional Formatting drop-down list in the Styles group of the Home tab. The Greater Than dialog box appears. The conditional formatting feature of Microsoft Excel allows you to apply formats to a cell or to a range of cells based on a condition or criterion. It helps you in highlighting the data quickly so that you can. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम क्या कर सकते हैं? हम स्टाइल में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ कंडीशन. हाईलाइटेड सेल रूल, यहाँ पे हमने सेल्स को हाईलाइट किया. अब सेल्स को हाईलाइट करने के लिए कंडीशन क्या क्या दे सकते हैं हम? ग्रेटर देन एनी नंबर, लेस देन एनी नंबर, बिटवीन एनी नंबर, इक्वल टू. हम इस तरीके से ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि कौन कौन से जो सेल है उनमें डेटा जो है ग्रेटर देन 80 है,
अगर हमें ये पता करना है कि कितने बच्चे हैं जो डिस्टिंक्शन में आए हैं, कितने बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आई है, या कितने बच्चों के 80% से ज्यादा मार्क्स हैं क्लास में, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन 80 लिख देंगे। तो ग्रेटर देन 80 के बाद में जो भी कलर हम यहाँ से डिसाइड करेंगे वो कलर जितने भी मार्क्स ग्रेटर देन 80 है वहां पे वो कलर आ जाएगा। दिस इज व्हाट दिस इज अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। And analyze the data that needs your attention. For example, you can highlight the cells that have percentage greater than 80 with green color. When the value in the cell meets the format condition, the selected formatting is applied to the cell. There are different formatting options available in Microsoft Excel, such as changing the background color, font, or border of the cell. In addition, you can apply custom formats based on your requirements. For example, you can make the cell text appear as bold and italics with a different font size based on a certain condition. The formatting options are applied based on a condition or criterion. In Microsoft Excel, you can either select a predefined condition, such as greater than, less than, equal to, and between, or specify your own condition based on your requirement. So here you can apply different type of conditions according to our requirement, कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कलर चाहिए, ठीक है, क्या कंडीशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा पे। ओके Type 80 in the format cells that are greater than text box in the greater than dialog box. Select the green fill with dark green text option in the drop-down list. Click the OK button. The percentage of students that is greater than 80 is highlighted in the green color. So यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की है कि if marks of the students is greater than 80 then it will fill with the green color. तो ग्रीन कलर से फिल हो गए हैं वो सारे सेल जिनमें मोर देन 80% मार्क्स थे, ठीक है। सो दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। To highlight the marks less than 40 with light red color, select the cells from C2 to G21. Select Highlight Cells Rules and then Less Than from the Conditional Formatting drop-down list in the Styles group of the Home tab. The Less Than dialog box appears. Type 40 in the format cells that are less than text box in the Less Than dialog box. Ensure that the light red fill with dark red text option is selected in the drop-down list. Click the OK button. The marks of the students that are less than 40 are highlighted in light red color. So here we have selected the cells और जिनके भी मार्क्स जो हैं वो लेस देन 40 हैं वो रेड कलर से फिल हो जाए। तो यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो ये है कि लेस देन 40 मार्क्स जो हैं वो हमें देखते ही पता लग जाए किन किन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लेस देन 40 है। तो हमने सेलेक्ट किया सारे सेल्स को एंड देन हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी इसमें स्टाइल्स में जाके लेस देन 40 एंड फिल विद रेड कलर। The screen displays the skill and concepts you have learned in this session.
So in this session we have learned about applying conditional formatting, and conditional formatting help us in highlighting data quickly so that we can analyze the data, and it will grab our attention. Okay. The conditional formatting feature of Microsoft Excel allows us to apply format to a cell, to a range of cell based on condition or any criteria. Now here is a quiz. Dash formatting help you in highlighting the data quickly so that you can easily analyze conditional formatting. Okay, submit. Yeah, right. You need to change the formatting of the marks of all students whose marks are less than 40, bold, italic, with the size 16. The following option enable you. Use conditional formatting and apply standard format, conditional formatting and apply custom format. Use conditional formatting and apply. I think this is right. Yeah. So in today's class we have discussed about this topic, that applying conditional formatting, and we will discuss it further in your live class. So do attend your live class for this topic, and we will discuss this topic in your live class also. Okay. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.